Hello friends, welcome to Diamond Academy. In the last lecture we have discussed up to question number 14. So I will discuss question number 15 onwards in this particular lecture. So basically we are discussing the problems on the symmetric group. So let's start our discussion. So we have what is given in question number 15. So we have alpha and beta belongs to Sn. Prove that alpha beta is even if and only if alpha and beta are both even or both odd. Okay, so let us recall our discussion on the even and odd permutation. So a permutation is said to be even if number of transposition. Let us find the relation. A permutation is said to be even permutation if number of transposition is even, and a permutation is said to be odd permutation if number of transposition is odd. Okay, so let us represent alpha and beta as a product of transpositions. Okay, let us represent this. Let us represent alpha as a product of m number of transposition, and let us represent beta as n number of transposition. Okay, so also let us represent tau as transposition corresponding to alpha and gamma as transposition corresponding to beta. So we have alpha is equal to tau 1, tau 2, tau 3, tau m minus 1, tau m, and we have beta is equal to gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma n minus 1 and gamma n. Let us take the product. So alpha beta is equal to tau 1, tau 2, tau 3, tau m minus 1, tau m times of gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma n minus 1, gamma n. Okay, so here we have m number of transposition and here we have n number of transposition. So total we have m plus n number of transposition. Okay, so alpha beta will be even if m plus n is even. Let us find the possibility for m plus n to be even. Okay, so m plus n even कब होगा, या फिर m and n दोनों even हो, या फिर m and n दोनों odd हो. ओके, तो कोई ऑड नंबर ले लो, 3 ले लो और ऑड एक ले लो, 5 ले लो. ठीक है, दोनों ऑड है ना, तो 5 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8 हो गया. तो 8 इवन आया. दोनों इवन ले लो, इवन का वैल्यू मान लो ये 2 ले लो, ये 4 ले लो, तो 2 प्लस 4 क्या हो गया, 6 हो गया. समझ में आ रहा है. या फिर अब m प्लस n की वैल्यू क्या करो, एक इवन लो और एक ऑड लो. मान लो ये इवन है और n ऑड है, या फिर m ऑड है और ये इवन है. ओके, तो ऑड की वैल्यू मान लो 3 ले लो और इवन 4 ले लो. 3 प्लस 4 क्या हो गया, 7 हो गया ना. 7 इवन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये ऑड है. तो एक इवन और एक, मतलब एक ऑड और एक इवन नहीं हो सकता. ठीक है, तो दोनों m और n दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, देन ओनली वी कैन से दैट अल्फा बीटा इज एन इवन परमुटेशन. ओके, लेट अस राइट डाउन द पॉसिबिलिटीज. So we have m, n and m plus n. The condition here is that alpha beta will be even permutation if m plus n is even. तो इसको क्या होना है, इवन होना है. समझ में आ रहा है. तो m को भी इवन ले लो और n को भी इवन ले लो. तो इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन, और m को ऑड ले लो और n को ऑड ले लो. तो m प्लस n क्या हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड. ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है. ठीक है, अब क्या करो, m को इवन ले लो, n को ऑड ले लो, इसको ऑड ले लो और n को इवन ले लो. तो इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस इवन ऑड. तो हमें क्या चाहिए, m प्लस n को इवन होना है ना. इवन कब हो रहा है, m एंड n दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो. समझ में आ रहा है. तो इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ इवन और बोथ ऑड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अल्फा को क्या लिखा था हमने, अल्फा इज इक्वल टू टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ m. ठीक है, तो अल्फा इवन परमुटेशन कब होगा, m इज इक्वल टू इवन. समझ में आ रहा है. और बीटा इज इक्वल टू गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा n. ठीक है, और बीटा इवन कब होगा, गामा इवन होगा, सॉरी n इज इक्वल टू इवन. मतलब n इवन हुआ, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मीन्स बीटा इज इवन. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इज अ इवन परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ अल्फा और बीटा
बोथ इवन हो या फिर बोथ ऑड हो। ठीक है, तो देखो दोनों को अगर अल्फा को हमने इवन ले लिया, अल्फा को इवन ले लिया, बीटा को भी इवन ले लिया, तो एम की वैल्यू क्या होगी, इवन हो गई, और एन की वैल्यू भी इवन होगी, तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। अब दोनों को ऑड ले लो, अल्फा बीटा दोनों को ऑड ले लो, तो अल्फा बीटा ऑड लेने पे क्या होगा, जो ट्रांसपोजिशन होगा वो भी ऑड होगा। लेट अस रिप्रेजेंट दिस। देखो अब अल्फा को हमने क्या किया, ऑड ले लिया, और बीटा को भी ऑड ले लिया, तो परमुटेशन हमारा क्या है, ऑड है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी ऑड होगा, तो एम क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, बीटा क्या है, ऑड परमुटेशन, इसका मतलब एन भी ऑड होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों को अल्फा और बीटा दोनों ऑड लिए, तो क्या हो गया, एम की वैल्यू भी ऑड आ गई और एन की वैल्यू भी ऑड आ गई, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब अल्फा और बीटा दोनों को इवन लिया, तो इवन लेने पे क्या होगा, एम की वैल्यू इवन होगी, क्योंकि अल्फा इवन है और बीटा भी इवन है, बीटा इवन होगा तो एन की वैल्यू इवन होगा, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ इवन और बोथ ऑड। और इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हो, अगर दोनों ऑड है मतलब अल्फा बीटा दोनों इवन है, या फिर अल्फा बीटा दोनों ऑड है, अदर वे राउंड चल रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होता है इसका मतलब अल्फा बीटा इज एन इवन परमुटेशन। समझ में आ रहा है? चलो ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। So we have associate an even permutation with +1 and odd permutation with -1। ठीक है, तो इवन परमुटेशन को किससे एसोसिएट किया गया, +1 से, और ऑड परमुटेशन को -1 से। ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू परमुटेशंस एंड रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। So let us multiply the permutation, so let us take both permutation as even, so even dot even। Okay, secondly let us take both permutation as odd, so odd dot odd। Third one, let us take one as even and another as odd. The multiplication of even permutation and odd permutation. And we have the fourth one, let us take one as odd and another as even. Okay, so this is +1 and we have this is also +1. Now we have even as +1, odd as -1, odd as -1, this is also -1, this is -1, this is +1. Okay, so +1 times of +1, this is +1, so this is even dot odd, so this is equal to +1 times of -1, this is -1, so this is nothing but odd, -1 times of -1, so this is +1, so this is odd, sorry, +1 is even. Now we have odd times of even, so this is nothing but -1, so this is odd, so this is nothing but the analogy between the result of multiplying the two permutations and the result of multiplying their corresponding number with +1 and -1, so this is basically the analogy. Okay, now let us discuss question number 17. So we have write alpha beta and alpha beta as product of disjoint cycle. So we have alpha as this is 1 goes to 2, 2 goes to 3, this is 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1, 6 goes to 7, 7 goes to 8, 8 goes to 6. Now we have beta as this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have 1, 3, 8, 7, 6, 5, 2, 4. Okay, now let us represent alpha as a cycle form. So alpha is equal to, this is 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 4, 4 goes to 5. Now we have 5 goes to 1, so this is closed. So 1, 2, 3, 4, 5. Now we have 6, 6 goes to 7, 7 goes to 8, 8 goes to 6, this is closed. So all number are covered, so this is alpha. Now we have beta as, this is 1 goes to 1, 1 goes to 1, this is closed. Now we have 2 goes to 3, 2 goes to 3, 3 goes to 8. Now we have 8 goes to 4, 4 goes to 7. Now we have 7 goes to 2, this is closed. Now we have 1, 2, 3, 4. Now 5 is not covered, so 5, 5 goes to 6, 6 goes to 5. Okay, so now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Everything is covered. So this is, so we have represented alpha and beta as a product of disjoint cycle. Okay, so there is no element in common. Similarly here also no element in common. Now we have let us write down alpha beta. So alpha beta is equal to alpha operation beta, this is equal to,
1 2 3, sorry, this is 1, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is 2 3 4 5 1 7 8 6. Now we have 1 2 3 4 5 6 7 8, and here we have 1 3 8 7 6 5 2 4. Okay, so we have alpha beta is equal to, let us start from 1. Okay, so here so we start from this particular direction, so 1 goes to 1, so 1 goes to 1, and we have 1 goes to 2, so this is 2. Now we have 2 goes to 3, 3 goes to 4. Now we have 4 goes to 7, here 7 goes to 8. Now we have 8 goes to 4, and we have 4 goes to 5. Now we have 5 goes to 6, 6 goes to 7. Now we have 7 goes to 2, 2 goes to 3. Now we have 3 goes to 8, 8 goes to 6. Now we have 6 goes to 5, 5 goes to 1. 6 goes to 6 goes to 5, and 5 goes to 1. So this is closed. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8, everything is covered. So this is the value of alpha beta. Now secondly, we have to write everything as a product of disjoint cycle. So this we can write as, let us write down this one as product of disjoint cycle. So this is, let us take first element and first one and last one. So this is first and 6. Now we have, let us take first one and the second last, this is 3, 1 and 3, this is 3. Similarly 1 7 1 5, this is 1. Let us write down this once again, this is not visible. Okay, so this is equal to 1 6 1 3 1 7 1 5 1 8 1 4 1 2. Okay, so this is the product of transposition. So we have represented alpha beta as product of transpositions. Now let us write down alpha. So alpha is equal to, let us write down this as product of transposition. So this is 1 5. How we can write this? So first one and the last one. So 1 5. Now we have first one and the second last. This is 1 4. So this is 1 and 3. 1 3. Now we have 1 2. Let us write down 6 5 8. So this is 6 8 and 6 7. So this is nothing but product of transposition. Similarly this one. So this we can write as, we can omit this one. So we have 2 3 8 4 7 5 6. So 5 6 is already a transposition. So beta is equal to 2 7 2 4 2 8 2 3. This is 5 6. So this is beta as a product of transposition, and this is alpha as a product of transposition, and this is alpha beta as the product of transposition. Now let us discuss question number 18. So we have alpha is equal to 1 2 3 4 5 6. This is 2 1 3 5 4 and 6. So let us represent this as cycle form. So we have 1, start from 1. So 1 goes to 2 and 2 goes to 1. So this is closed. Now we have 3 goes to 3. This is closed. Now we have 4 goes to 5. 4 goes to 5, 5 goes to 4, and this is 6. So this is nothing but, we can omit 3 and 6. So this is 1 2 times of 4 5. Okay, so alpha inverse will be equal to 1 2 times of 4 5 times of inverse. So this is nothing but 4 5 inverse and 1 2 inverse. So this is, and we have seen that transposition is self inverse. So this is nothing but 4 5, and this is nothing but 1 2. So this is equal to 4 5 times of 1 2. Okay, because 1 2 times of 1 2 is nothing but identity. Let us multiply this. So 1 2 times of 1 2. So this is equal to, देखो, 1 goes to 2, 2 goes to 1. So this is closed. Now we have 2 goes to 1 and 1 goes to 2. So this is closed. This is the identity. So 1 2 का inverse क्या होगा? 1 2. Self inverse हो रहा है. Similarly 4 5 का inverse 4 5. This is the value of alpha inverse. Now we have
Let us find beta alpha. Beta alpha is equal to beta operation alpha. So this is nothing but, let us write down beta. So 1 6 2 1 3 2 4 4 5 3 6 5. Let us multiply this with 1 2 2 1 3 3 4 5 5 4 6 6. This is equal to, let us do the multiplication. So let us start from 1. So 1 goes to 2, 2 goes to 1. So this is closed. Now we have 2 goes to 1. Let us start with 2. So 2 goes to 1 and 1 goes to 6. So this is 6. Now we have 6 goes to 6 and here 6 goes to 5. This is 5. Now we have 5 goes to 4 and 4 goes to 4. So this is 4. Now we have 4 goes to 5 and 5 goes to 3. So this is 3. Now we have 3 goes to 3 and 3 goes to 2. This is closed. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So everything is covered. So this is equal to 2 and we can omit this one. So this is 2, 6, 5, 4, 3. Okay. Now let us find alpha beta. Let us write down the value of alpha. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here we have 2, 1, 3, 5, 4, 6. This times of beta 1, 6, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 6, 5. Let us do the multiplication. So alpha beta is equal to, let us start from 1. So 1, sorry, यहाँ से ना 1 goes to 6, 1 goes to 6 and 6 goes to 6. So this is 6. Now we have 6 goes to 5 and 5 goes to 4. So this is 4. Now we have 4 goes to 4, 4 goes to 5. Now we have 5 goes to 3, 3 goes to 3. Now we have 3 goes to 2, 2 goes to 1. So this is closed. Now we have start from 2. So 2 goes to 1, 1 goes to 2. This is, sorry, 2 goes to 1 and 1 goes to 2. So this is closed. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So everything is covered. So we can omit this one. So we have 1, 6, 5, 4, 3. Okay, so this is alpha beta and this is beta alpha. Now let us discuss question number 19. Okay, देखो, give two reasons why the set of odd permutation in Sn is not a group. Okay, so let us take a set T as a set of odd permutation. So this means it contains all the permutations belongs to symmetric group such that sigma is equal to odd. Okay, so we have to show that this set T is not a this set T is not a subgroup. Okay, so the first reason is identity does not belongs to T, because identity क्या होता है, identity का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ इज 1. तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन. तो आइडेंटिटी इवन परमुटेशन है, तो ये सेट टी में लाई नहीं करेगा, पहला रीज़न. दूसरा क्या हो गया, क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा. ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए ना. क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाइड. ओके, अब देखो 1 2 टाइम्स ऑफ 3 4. ओके, तो 1 2 क्या है, ऑड परमुटेशन. 3 4 क्या है, ऑड परमुटेशन. समझ में आ रहा है. तो लेट अस नेम दिस एज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू दिस वन. तो ये क्या, अल्फा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. तो हेयर अल्फा इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन और टू क्या है, इवन है. ओके, सो इफ यू कैन, इफ हेयर अल्फा इज रिप्रेजेंटेड एज इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, हेंस अल्फा इज इवन. तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा ना. 1 2 जो साइकिल है ये क्या है, ऑड परमुटेशन. 3 4 भी ऑड परमुटेशन. तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इवन परमुटेशन. तो इवन परमुटेशन टी में लाई नहीं करेगा. तो द फर्स्ट रीजन इज आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, सो इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट टी. ऑल्सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल 1 2 इज ए 2 साइकिल. ठीक है, तो 2 क्या है यहाँ पे, इवन है. इसका मतलब 1 2 क्या है, ऑड परमुटेशन. 3 4 सिमिलरली ऑड परमुटेशन. दोनों का प्रोडक्ट क्या है,
दोनों का प्रोडक्ट लेने पे क्या आ रहा है, अल्फा, अल्फा क्या आ रहा है, इवन परमुटेशन. तो इवन परमुटेशन डज नॉट लाई इन दिस set T. Okay, so these are the two returns based on which we can say that set of odd permutation in Sn is not a subgroup. Okay, let us discuss question number 20. देखो, let alpha and beta belongs to symmetric group Sn. Prove that alpha inverse beta inverse alpha beta is an even permutation. Okay, so let us represent alpha. Let us take alpha as m cycle and let us take beta as n cycle. Okay, and we have represented as m cycle can be represented as m minus 1 number of transposition. Similarly, beta can be represented as n minus 1 number of transposition. Okay, so we have alpha is equal to, we have alpha as m cycle, so this is equal to alpha 1 alpha 2 alpha m minus 1 alpha m. ये m cycle हो गया. अब इसको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे, alpha 1 alpha m. So the first one and the last one. Now we have alpha 1 alpha m minus 1. First one and the second last one like this. So we have alpha 1 alpha 2. So ये कितना हो गया, m minus 1 number of transposition. Okay, let us take alpha inverse. So this is equal to alpha 1 alpha m, alpha 1 alpha m minus 1, alpha 1 alpha 2. We have taken the inverse. So this we can write as alpha 1 alpha 2 inverse alpha 1 alpha m minus 1 inverse, and we have alpha 1 alpha m inverse. Okay, so ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स. तो दिस इज इक्वल टू दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मतलब 1 2 टाइम्स ऑफ 1 2 क्या आएगा, आइडेंटिटी. दिस मीन्स 1 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 2. मतलब ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इन्वर्स. दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा m minus 1. सॉरी, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा m minus 1 और अल्फा 1 अल्फा m. दिस इज अल्फा इन्वर्स. और अल्फा क्या है देखो, अब इसको रीअरेंज करो. तो दिस इज अल्फा 1 अल्फा m, अल्फा 1 अल्फा m minus 1, अल्फा 1 अल्फा 2. दिस इज नथिंग बट अल्फा. तो अल्फा इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा आ गई. सिमिलरली बीटा इन्वर्स इज इक्वल टू बीटा. लेट अस राइट डाउन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस. देखो, अल्फा में कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, m minus 1. बीटा में कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, n minus 1. बिकॉज वी हैव टेकन अल्फा एज m साइकिल, तो m साइकिल होगा तो m minus 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देगा. और बीटा में क्या होगा, बीटा क्या लिया हमने, n साइकिल, तो n नंबर और n minus 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. और क्या देखा हमने, अल्फा इन्वर्स की वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा इन्वर्स में कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, m minus 1. सिमिलरली बीटा इन्वर्स में n minus 1 number of transposition, because beta inverse is equal to beta. Let us write down the number of transpositions. Transposition in this one, alpha inverse beta inverse alpha beta. देखो, अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स अल्फा बीटा. देखो, अल्फा इन्वर्स क्या है, अल्फा. तो अल्फा इन्वर्स में m minus 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. बीटा इन्वर्स में, बीटा इन्वर्स की वैल्यू बीटा, सो n minus 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. सिमिलरली अल्फा में कितना होगा, m minus 1, बिकॉज अल्फा इज m cycle, बीटा इज n cycle, so n minus 1. So let us find the total number of transpositions. So we have m minus 1 plus n minus 1 plus m minus 1 plus n minus 1. So this is equal to 2 times of m minus 1 plus n minus 1. So this is equal to 2 times of m plus n minus 2. And let us take this one as k. This is equal to 2k, where k is equal to m plus n minus 2. ये 2k क्या हो गया, इवन आ गया ना. जिसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स अल्फा बीटा इज हैविंग इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस.
So if a permutation is having even number of transformation, then we call that permutation as even permutation. Okay, so we have discussed up to question number 20. We will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.